Namaskar. I am Dr. Yogesh Batra and I am a senior consultant in gastroenterology at Indraprastha Hospital, Delhi. My brief today is to talk about common problems of gastroenterology. तो अगर हम पेट की बीमारियों के बारे में सोचें तो ये कहा जाता है कि जो पेट की बीमारियां हैं ये बेसिकली दर्शाती हैं कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है. So if your abdomen or your stomach is normal or your digestion is normal, then you are likely to be a very fit individual. So what are the normal day-to-day diseases or day-to-day problems that we see or face in gastroenterology? First of all, pain abdomen, followed by acidity, gas formation, bleeding from the mouth or from the rectum. These days, a very unique problem is coming up as we are becoming more and more prosperous, and that is fatty liver. And finally, jaundice. So going over these problems one by one, pain abdomen. So pain abdomen can be very, very trivial. It can be a measure of indigestion, but यही पेन कई बार बहुत सीरियस हो सकता है. तो पेन हमारे एब्डोमेन के जो सारे ऑर्गन्स हैं उनमें से कहीं से भी आ सकता है. तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है लिवर, which weighs about 1.5 kg. लिवर के अंदर लिवर एब्सेस, हेपेटाइटिस, इस तरह की बीमारियां होने से पेन हो सकता है. लिवर बाइल बनाता है और ये बाइल डक्ट के रास्ते से इंटेस्टाइन में जाती है. सो गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर है तो सिवियर पेन हो सकता है. यही स्टोन स्लिप करके अगर बाइल डक्ट में चला जाता है तो इट कैन अगेन लीड टू पेन एज वेल एज जॉन्डिस एंड फीवर. देन pancreas. Pancreas is an organ which can be injured by various insults like alcohol, and the pain of both acute and chronic pancreatitis can be very, very severe. Intestinal pain is described as a colicky pain. Colicky pain means कि pain कम होता है, ज़्यादा होता है. It does not remain continuous, whereas solid organ pain or the pain occurring from the liver and the pancreas is a continuous kind of pain. So intestinal pain के कारण हो सकते हैं something as simple as irritable bowel or something as serious as a cancer. Problem in pain abdomen is one has to differentiate कि ये pain serious है या non serious है, हमें अस्पताल जाना है या नहीं. So any pain which is severe, जो हमारे घरेलू दवाइयाँ लेने से नहीं ठीक हो रहा, in any case हमें अस्पताल जाना है. Pain which has been there for a long time, we need to seek medical attention, and this pain also has to be investigated. Pain which is associated with abdominal distension, bloating, any lump or gola formation in the abdomen also needs medical attention. Pain associated with weight loss or associated with bleeding, again, one has to investigate. So this much about pain. The second most common problem that people face is acidity. So हमारी आज की दुनिया में most of us are doing hurry, worry and curry, which means that we are always in a hurry because we are meeting deadlines all the time. We are always worried because these deadlines are not being completed. And in between we are having food, junk food and fast food, and all this results in a cocktail which results in a lot of acid being formed in the stomach. This acid comes up. It comes up into the chest, it causes chest pain, it causes nausea, vomiting, and it can even lead to respiratory distress. The solution to this problem is slow down, reduce your pace of life, improve overall physical fitness, and again, if you feel severe pain, if your acid is not going away, then it needs to be evaluated by endoscopy, a CT scan, or an ultrasound. The third most common thing is gas. So the genesis of gas is similar to that of acid, and those who have acid usually have a lot of gas also.
This gas results in bloating, distension of the stomach. पेट फूल जाता है और पेट ठीक नहीं होता। कुछ भी खाने के बाद पेट बिल्कुल ड्रम जैसा हो जाता है। पेशेंट्स यूजुअली ये बताते हैं। So gas also is precipitated by anxiety, it is precipitated by a lot of hurry and again trying to meet a lot of targets. It is precipitated by fast foods, foods which contain a lot of maida in it. So noodles, pasta, pizza, burgers, these are very, very gas forming foods. चने, छोले, राजमा, प्याज, आलू, ये सब चीजों से भी गैस बहुत बनती है। So the solution is simple medication and reduction in these kind of foods and change in overall lifestyle. The next thing is bleeding. Bleeding can be blood and vomiting, which is a much more serious situation, or blood from the rectum, which can be because of things like hemorrhoids. Blood vomiting means that we are either dealing with an ulcer or esophageal varices. Varices are veins within the esophagus which can rupture and bleed. While bleeding from the rectum is usually because of hemorrhoids or piles, but they can also be because of things like fissures, polyps, or solitary rectal ulcers. Piles can be tackled with medication, with change in diet, while if the situation is more serious, it has to be dealt with either surgically or with more definitive medical management. So in a nutshell, bleeding is always an emergency wherever it is occurring from, and whenever blood is seen, you have to consult a doctor. You cannot sit at home while the hemoglobin is going on dropping, because this can lead to serious consequences. It can lead to things like cardiac failure, especially in the elderly. So bleeding जब भी दिखाई पड़े तो डॉक्टर को दिखाना ही है, उसका कोई ऑप्शन नहीं। फैटी लिवर। सो आजकल जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल सीडेंटरी होता जा रहा है, हम ओबीस होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान जो है वो डायबिटीज का कैपिटल है इंडिया का, वर्ल्ड का। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डायबिटीज है, और बिकॉज डायबिटीज में शुगर के लेवल ज्यादा होते हैं तो ये शुगर फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये शुगर फैट में कन्वर्ट होता है तो उसको कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होना होता है। तो ये फैट जो है लिवर में जाके जमा हो जाता है, बिकॉज उसको सबसे कन्वीनियंट लगता है। जब ये फैट लिवर में जमा होता है तो कुछ दिन के बाद इसके अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। जब इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है तो लिवर के एंजाइम बढ़ने लगते हैं, तो इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। शुरू में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमें नहीं लगता था कि फैटी लिवर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बट अब हम ये देख रहे हैं कि फैटी लिवर से सिरोसिस तक हो सकता है, लिवर डिकॉम्पेंसेशन हो सकता है और लिवर फेलियर हो सकता है। जब लिवर फेलियर होता है तो लिवर ट्रांसप्लांट होता है। फैटी लिवर का अभी तक एकमात्र बेस्ट इलाज जो है वो वेट रिडक्शन। तो आप देखोगे कि मैं ज्यादा चीज में एक ही चीज बोलता हूँ, ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। सो वेट रिडक्शन, exercise, and mental stability. These are the three things which go a long way in GI. Possibly the last thing that we see is jaundice. Jaundice can be because of hepatocellular jaundice, मतलब लिवर के सेल्स के अंदर सूजन है, या फिर बाइल डक्ट के अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन। जो हम हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस की, जो हम हर सीजन में देखते हैं कि जब बारिश का समय आता है तो वायरस शरीर में घुस जाता है, वो लिवर में जाके बैठ जाता है, लिवर के सेल्स को इन्फ्लेम कर देता है और उसकी वजह से जॉन्डिस होता है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है वो बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, या ऑब्स्ट्रक्शन सीबडी स्टोन की वजह से हो सकता है, या फिर और सीरियस सिचुएशंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोई कैंसर। ये कैंसर बाइल डक्ट का हो सकता है या पैनक्रियास का हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी जॉन्डिस होता है आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही है। अगर हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस है तो वो 2 से 3 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है।
अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम ERCP बोलते हैं, जिससे कि स्टोन को बाइल डक्ट से बाहर निकालना। अगर कैंसर की वजह से जॉन्डिस है तो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना है और उसके बाद कीमोथेरेपी या सर्जिकल। तो ये एक नटशेल में सारी बीमारियां हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड। सारी तो नहीं, मेजर बीमारियां हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से रिलेटेड जो हम डे टू डे में देखते हैं। इनके बारे में या किसी और चीज के बारे में आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। सो आदिरा का सवाल है कि व्हाट causes UC? So UC is ulcerative colitis. Ulcerative colitis is an autoimmune disease. By autoimmune we mean कि बॉडी की अपनी इम्यूनिटी अपने अगेंस्ट हो जाती है। तो शरीर में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। इन सोल्जर्स का काम होता है कि अगर बाहर से कोई इन्वेडर आए तो उससे लड़ते हैं। तो ये सोल्जर्स लिम्फोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट्स, इस तरह के सेल्स होते हैं। पर जब ये इम्यूनिटी डिसाइड कर ले कि जो आपका अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कोलॉन है, वो एक एक्सटीरियर ऑर्गन है, बाहर से कुछ आया है, तो वो उसके अगेंस्ट हो जाती है। अगेंस्ट क्यों हो जाती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं which have not been very clearly defined as yet, but it is an autoimmune phenomena like many other autoimmune diseases, like autoimmune hepatitis, autoimmune skin diseases. So UC is also autoimmune disease. Hence the treatment for UC is suppression of immunity. Shobna wants to know that what are the complications of UC and how do you screen for them? UC can have a number of complications. The complications of UC can be local or they can be systemic. When we talk about local complications, then bleeding is the foremost. Apart from bleeding, UC can also develop cancer in the later stages. There can be abscesses which can form because of UC. In systemic complications, there can be things like effect on the eyes, iritis, effect of the spine or ankylosing spondylitis. There can be associations with other autoimmune diseases like celiac disease, like autoimmune hepatitis, like thyroid disease. So it is a spectrum of autoimmune disease and a number of complications can occur with it. Rishika wants to know again the same question which I have already answered. What are the complications of UC and how do you screen for them? Vaibhav, can lifestyle changes help in controlling gastrointestinal disorders? Yes, definitely. So the predominant reason for gastroenterological disorders today is lifestyle. So we have become sedentary, we have started drinking a lot, we do not exercise, and we are under a lot of stress. This is happening as a nation across the country. This is leading to a very heavy toll on our bodies and specifically on the GI tract. And when I talk about a heavy toll, it means it is leading to diseases like fatty liver, diseases like ulcerative colitis, and it even goes right up to cancers. So if we are leading a healthy life, we are getting up on time and sleeping on time, we are not hurrying throughout the day, it will reduce the burden of GI disease to a large extent. Muskan wants to know, can gastrointestinal problems be hereditary? Yes, very much so. So, as we were talking about ulcerative colitis is not directly transmitted from parents to children, but there is a higher predisposition in those who have ulcerative colitis. Similarly, there are liver diseases which run in families. They can be cancers which run in families. So, for those who have had colon cancers, their family screening is a must because the same gene which is there in one person can be there in others also, and it can result in cancer spreading within the families.
There's a question by Tejas, what are the treatment options available for problems in the liver? So, treatment options essentially for investigation, we do what is known as endoscopy. Endoscopic modalities are now very many. So, they can be upper GI endoscopy, they can be colonoscopy, they can be ERCP, they can be double balloon endoscopy. Uh, Other investigated modalities can be ultrasound, it can be a CT scan. Once we are sure of what disease we are dealing with, the treatment is usually either by medical management, and in the Vayusela, followed by medical management, we can do endoscopic management. So small polyps can be removed, ERCP can be done to remove stones, strictures can be dilated, coins can be removed. So a whole lot of things now can be done by endoscopic management. And finally, if needed, surgical management. Like you have a cancer, it can be removed completely. If there is a collection which needs to be drained, it can be drained surgically. Thank you so much. It was a very